Hello students, today we'll be covering the topic interpersonal skills. In this slide, in this video, we would be covering interpersonal skills and these are the things which we'll be covering it further. So let's start one by one. First of all, we should know what do we mean by interpersonal skills. Now see, interpersonal skills in Hindi, if I say इंटरपर्सनल स्किल्स, द वे जिस तरीके से आप किसी से बात करते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स. इट इज़ नथिंग बट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप. आप जिस तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो, इसीलिए इसको हम पीपल स्किल्स भी कहते हैं. सी एट टाइम्स इट हैपन्स वी आर इमोशनली डाउन, वी आर स्ट्रेस्ड, बट देन it is up to us how we handle these things in a positive way and therefore control the situation and have the output. Output means जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, every organization wants that you work in a productive manner. Now productive manner, how you'd be able to work if you have strong interpersonal skills. किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हो. सो ऑल दीज थिंग्स दे कवर अंडर इंटरपर्सनल स्किल्स. द मेन गोल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल इज ग्रोथ, career advancement. There should not be any negativity, there should only be positivity. So see, interpersonal skills are the attitudes and habits that make workers at any seniority level valuable employee and contributing member of the work environment. Like I said, you should be part and parcel of the growth process of the organization. So now interpersonal skill, as I said, we also call it people skills. Why? Because we have to deal with people only. आपने वहाँ पे communicate करना है. किससे communicate करना है? Either your senior, your junior or your co-workers. So these are also known as people skills. What do they include? They include social skills, teamwork, problem solving, which is very important, and critical thinking, professionalism. So there are set of things in which you need to act different in a manner कि जब आप घर पे होते हो you have certain different attitude. When you are in organization you tend to act in a different manner. So you need to have balance between these two. You have to understand the decorum of the organization and work accordingly. Now we'll proceed to the next one. Why is interpersonal skill important? क्यों important है? First of all, interpersonal skills, they are recognized at the time of interview only. इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो. सो इंटरपर्सनल स्किल्स एक्ट्स देयर ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस ऑल्सो. Otherwise, it helps in life skills training. It can be critical in enhancing the self-esteem of participants, providing them the tools necessary to overcome their fear of independence. Fear of independence. At times it happens that we have inferiority complex in us. वो चीज़ें आप कैसे दूर करते हो, वो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे, वो आप इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू लर्न करते हो. सो देयरफॉर दिस इज़ द रीज़न वाई इंटरपर्सनल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Communication in interpersonal skill. See, communication is very important in having a good hold on interpersonal skill. We have done a full-fledged lesson on communication wherein I've covered the process also, the barriers also, and the various way to overcome also. So communication, as I said, it is nothing but exchange of ideas. क्या होता है? एक्सचेंज करते हो आप आइडियाज़ को. और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कब कंप्लीट होता है? वो तब कंप्लीट होता है जब आप जिस तरीके से समझा रहे हो आपके रिसीवर को उसी तरीके से समझ में आया हो. ओनली देन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेट टू बी कंप्लीट. सो हाउ वुड यू कम टू नो? फीडबैक. फीडबैक से पता चलता है. सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस. Proper attention to the language of others can give us insight to what it is that they are really saying, help us to respond appropriately and effectively. See, only when you will understand
the message, then only you will be able to respond, राइट अगर आपको मैसेज क्लियर ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आया या आप दूसरे तरीके से समझ रहे हो, डेफिनेटली देर वुड बी अ ग्लिच, एंड टू रिमूव दैट ग्लिच, व्हाट इज इट इज कॉल्ड, इट इज बैरियर, उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, what are the different tools? One of the very important question often asked कि इंटरपर्सनल स्किल्स के टूल्स कौन से हैं, मीन्स किन चीज़ों के थ्रू आप इंटरपर्सनल स्किल को और इन्हांस करते हो. There are 7 areas. There are the 7 areas: verbal, non-verbal, listening, negotiation, problem solving, decision making, and assertiveness. We would be discussing one by one all these 7. So you need to remember here tools in interpersonal skills. There are 7 tools. There are 7 yardsticks, rather I would say, through which you have good hold on interpersonal skills. So let's start with verbal communication. Now, as the word suggests, verbal is orally. So verbal communication is कि आप अपने words को किस तरीके से डिज़ाइन करते हो जिससे कि आपकी टोन भी करेक्ट हो and it should understood in the same manner. ठीक है, it is very important. See, बहुत बार होता है कि हम बोल तो पॉजिटिव चीज़ रहे, बट इट इज़ द टोन विच अफेक्ट्स इट. टोन अफेक्ट्स इट मीन्स आप बोल अच्छी चीज़ रहे हो, बट जस्ट बिकॉज of the choice of words which you have chosen, उसकी वजह से the message conveyed goes negative. So choice of word is very important, which is the first tool, verbal communication. Verbal communication में आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने कंटेंट को डिज़ाइन करना है. So there is an example given here. See, Fred's initial week with intestinal distress Taco revealed that he was not capable of good verbal communication. ठीक है, किस पता चला कि एम्प्लॉय जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा नहीं है. ही मम्बल्ड ऑर्डर्स एंड देन स्क्रीम्ड, मीन्स जब वो बोलता, ही वॉज नॉट क्लियर इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो ही यूज टू शाउट एट द एम्प्लॉयज. डेफिनेटली नो एम्प्लॉय वुड टेक दिस. So what was the result? Result क्या था? Most employees grew to dread working with Fred because they could not understand his direction. Definitely अगर कोई words को mumble करे, कोई clear नहीं है, अगर आप अपने instructions को ठीक से नहीं बता पा रहे हो, there would be a problem, and that problem would lead to non-clarity of instructions. So it is a good example of non-verbal it is a good example of verbal communication. If you are not good if you're not good at verbal communication, you cannot be a good communicator as well. Second tool, we'll proceed to the second tool. See here, this slide is just saying कि verbal communication आप कैसे strong कर सकते हो. You can strong it by asking questions. Yes, we people do hesitate while asking questions. हमें लगता है कि पता नहीं what effect would it create, but rather than कि आप कोई गलती करो, it is better to ask questions, well crafted questions. It shows your emotional intelligence also, right? Then, as it is said, you need to ask the question. Don't be afraid to ask question. Sometimes shyness, concern, over making a fox pass or fear of being perceived as a busybody. See, ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करोगे, your verbal communication would never be strong. Now what is this? Fox pass क्या होता है? Fox pass होता है जो आपको ऐसा लगता है कि if you'll do, it would be a source of embarrassment for you. It happens with all of us, है ना. हम पूछते नहीं हैं कई बारी questions. Why we do not ask? We feel that the question doesn't suit the environment. Maybe, but definitely अगर आपको अपने thoughts को clear रखना है, अगर आपने अपने thought process को बिल्कुल साफ रखना है, you need to clear your doubts. So asking question. अच्छा, questions किस तरह के होते हैं? There can be only 2 questions. Either a question can be closed or it can be open. Closed और open क्या? Closed means जिसमें आपका जो आंसर है वो या तो yes होगा या तो no होगा. No other criteria.
ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है. जो क्वेश्चन पूछा गया या तो उसका आंसर आप येस दो या नो दो. लाइक इट इज सेड, आर यू हैप्पी विथ टुडेज प्रेजेंटेशन? सो डेफिनेटली यू नीड नॉट इलैबोरेट सच क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू आंसर येस और नो. ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें आपको रिस्पॉन्स देना होता है. यू कैन इलैबोरेट योर थॉट्स ऑल्सो. सो people prefers in different situations different questions are followed. If the questionnaire is very straightforward, तो आपको होता है कि चलो yes और no में ही आंसर होगा. बट if anything requires great insight, depth knowledge चाहिए, तो आपको उसमें ओपन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. Now, कैसे पता चलता है the question is open or closed? See, open questions में we have 5W and 1H. These small things, no, they would cover your MCQs. So please concentrate. 5W क्या होते हैं जिससे आपके open questions को डिज़ाइन किया जाता है? It is where, what, why, who and when. ये 5 चीज़ें जब आपके क्वेश्चन में यूज होती हैं, a question has to be open question. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक हाउ होता है. सो ऐसे क्वेश्चंस, ये चीज़ें W फैमिली एंड H इज देयर. सो सच क्वेश्चंस यू वुड क्लासिफाई अंडर ओपन क्वेश्चंस. लाइक व्हाट इज अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन दैट यू फाइंड मोस्ट इंगेजिंग. इसमें आप येस और नो में आंसर नहीं करोगे. व्हाट से स्टार्ट हुआ, इट इज ओपन क्वेश्चन. सो यहाँ पे यू हैव टू गिव अ थॉटफुल इंसाइट. Second tool we have non-verbal communication. It is not always कि हम बोल के ही अपनी चीज़ों को समझाते हैं, है ना. बहुत बार हमारे एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड जेस्चर्स, दे कम्युनिकेट फार बेटर दैन आवर वर्ड्स. फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको पता चल जाता है. अगर आपसे सपोज करो इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको आता है या नहीं आता है, it can be clearly read on your face. So facial expression is very important. Non-verbal communication is what? It is nothing but use of correct facial expressions, body language and hand gestures to communicate what is running in your mind. So if you are not cautious with your facial expressions, negative non-verbal communication consisted, कैसे पता चलता है? Frowns, एंग्री स्टेयर्स, आप गुस्से से किसी को देख रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस. पॉजिटिव कौन से होते हैं? पॉजिटिव में होता है यू ऑलवेज हैव अ स्माइल. एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो एम्प्लॉई है हमें ओवरबर्डन कर देता है काम से, बट स्टिल वी हैव टू कीप अ स्माइल टू शो अ पॉजिटिव जेस्चर. Then and uses hands to further explain complicated directions. Speak clearly and animate with positive non-verbal communication. When you are working somewhere, be very cautious in such things. The way you carry yourself, the way you express yourself when you're doing non-verbal communication. Here also two-way communication is essential. जब आप कोई expression दे रहे हो, you would be getting the response from the same also. थर्ड इज लिसनिंग स्किल्स. अब लिसनिंग स्किल्स में जो MCQ में आपसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. सी द एबिलिटी टू हियर अटेंटिवली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन करेक्टली. ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू हियर वेरियस थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बट वी रिटेन ओनली दोज विच वी फील आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो इफेक्टिव लिसनर किसे बोला जाता है? A very effective, this is ineffective, we are talking about effective listener. Effective listener is who clearly listens the message and at the same time he processes also in a very clear way. Ineffective कौन सा हुआ? जो ध्यान नहीं दे रहा, जो सिर्फ सुन रहा है, what we call as hearing. आप सुन तो रहे हो बट आप उस पर attention, you're not paying attention to it. Ignore करना. So there is a difference between hearing and listening. What is the difference? They are not the same. Most people can hear, most people can, बहुत जने सुन सकते हैं, but few can really listen. What does it mean? आप सुनते हो पर आप अपने दिमाग में वही चीज़ रखते हो जो आप रखना चाहते हो. So if you are working in an organization, you have to
filter such things कि कौन सी चीज़ें retain करनी है और कौन सी चीज़ों को let go करना है. The best way to illustrate hearing is through the biological process involved in sensory perception. See, our ears pick up sound waves around us, send signals to our brain, and our brain in turn tells us what the sound is and where it is coming from. So this is a cycle. आपने सुना, आपने ब्रेन को ट्रांसमिट किया, ब्रेन ने वापस आपको बताया कि इसमें से कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है. So what is the real difference? See, listening जो है, it involves the extra step of understanding. Yes, so this is the difference. Listening में आप चीज़ों को समझ रहे हो, you are understanding, but which is not there in hearing. Listening actually shows more participation from the person. See, an example, I've explained this with the help of an example. A secretary presented her boss the schedule for the next day. She told the boss that she has a packed day for tomorrow and that she only has an hour of break time. अब उसने ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी अपने बॉस को. क्या ट्रांसमिट किया कि कल का जो स्केड्यूल है दैट इज़ ऑल पैक्ड अप और वो कितनी देर के लिए फ्री है, ओनली फॉर एन आवर. बट बॉस क्या था, शी वॉज टू बिजी. उसने बड़े ध्यान से नहीं सुना, उसने सिर्फ सुना, उसने समझा नहीं. एंड मोशनड फॉर हर प्लेस टू द स्केड्यूल ऑफ हर डेस्क. Now the boss continued to study the report as if there were no interruption. Why? Because he was too much involved, too much engrossed in the report. तो सेक्रेटरी ने जो बोला उसने उस पर ध्यान नहीं दिया. Now what is the case? The case says कि बॉस ने क्या किया, heard. The boss simply heard, he did not listen. So I hope by this example it is clear the difference between hearing and listening. To make an appropriate but committal reaction. If the boss had been listening, his reaction would have been different. See, these are more elaborative forms. Listening kya hai? It promotes a more accurate and deeper understanding of a person's communication. Then comes the next word, the next tool, I would say, negotiation. If I talk about negotiation, what is in layman's language, what is the meaning of negotiation? क्या होता है negotiation? See, negotiation is kind of interpersonal skill, tool of interpersonal skills, जहाँ पे आप किसी दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करते हो. कुछ इसकी सुनी, कुछ इसकी सुनी, and then you just have a equilibrium state, I would say, wherein you retain few points of this and few points of that. So negotiation is wherein all the parties involved try to avoid argument and agree to each other things. Example, see the example. Violent excels in negotiation as the employees and customers are always complaining or asking for favors. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स दोनों क्या है, कंप्लेन करते रहते हैं फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स. नाउ शी इज़ गुड एट लिसनिंग. अ पर्सन हु लिसन्स केयरफुली वुड बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. सो शी इज़ गुड एट लिसनिंग एंड डिस्कसिंग सिचुएशंस. नेगोशिएशन आप कैसे प्रोसेस को आप हैंडल करोगे? सी, नेगोशिएशन कैन नॉट बी डन विदाउट डिस्कशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज. आपको दोनों पार्टीज़ को पहले बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ बोथ ऑफ देम एंड देन क्रिएट दैट इक्विलिब्रियम विच आई सेड. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड, फ्रेड इग्नोर्स एनी रिक्वेस्ट फॉर डिस्कशन एंड रूल्स विद एन आयरन फिस्ट. दिस हैज़ कॉज्ड हिज एम्प्लॉयज़. अगर आप कॉन्स्टेंटली सुनते जाओगे और इग्नोर करते जाओगे, योर एम्प्लॉयज़ वुड फील दैट द बॉस इज बीइंग अनफेयर and undiplomatic, especially when it comes to solving problems. So you have to create a balance between the customers and the employees because both are important. Employees हैं जो आपको productivity देते हैं and customers, it is said that they are the king of the business. Next is problem solving. Next tool is problem solving. See, problem solving is also again
Once you negotiate in the sense when you once you listen that what they want. The fifth tool you'd be stepping into is problem solving. You would, this is a very important skill and the most complex part of the process. इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सोल्यूशन को ढूंढते हो. कैसे ढूंढते हो? आफ्टर कंसीडरेबल थॉट टू सॉल्व न्यूमरस इश्यूज विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम. यू डू लॉट ऑफ केस स्टडीज. इसमें आप केस स्टडीज पढ़ते हो कि इस सिचुएशन में हाउ पीपल हैव एक्टेड, how they have negotiated and how they have come to a conclusion. Last is decision making. Once you are able to solve the problem, you have to take a decision. Now, decision regarding what? Decision regarding the concluding the matter and making both the parties equally happy. So we all have to make decisions all the time, and it happens in our day to day life also. हमें बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेना पड़ता है. छोटी छोटी चीज़ें लाइक इश्यूज लाइक व्हाट टू हैव फॉर लंच, चेंजिंग डिसीजंस लाइक वेयर, व्हाट टू स्टडी, हु टू मैरी. ये छोटे छोटे डिसीजंस दे हेल्प अस इन taking big responsibility, in shouldering big responsibilities and finally reaching the decision. Now some people, they're very good at decision making, but some people, they land up at wrong place. So others resort to decision making by taking a vote, sticking a pin in a list or tossing a coin. अगर आप बहुत ज़्यादा confused हो, आप क्या करते हो? आप वोट करवाते हो और यू जस्ट डिस्कस थिंग. डिस्कस जब हम करते हो उसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग. ओके, रिमेंबर दीज वर्ड्स, दीज टर्म्स. ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं इसको हम. सॉरी, ब्रेन स्टॉर्मिंग. इसमें क्या करते हैं हम? बहुत सारी कंटेंट्स को इकट्ठा करते हैं एंड देन वी जस्ट लुक फॉर द बेस्ट सोल्यूशन एंड प्रोसेस इट. नाउ द लास्ट टूल इज assertiveness. Assertiveness is once when you're very confident and you are pushing your thoughts into the others very in a very confident way. So it is being able to express yourself with confidence without having a resort to passive aggressive or manipulative behavior. इसमें आपने जो ठीक, you have given lot of studies, you have studied a lot the decisions rather. Here you have done lot of case studies. आपने प्रॉब्लम को समझा, आपने नेगोशिएट किया, आपने डिसीजन मेकिंग किया एंड देन यू आर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज टू द अदर्स विथ कॉन्फिडेंस एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट बीइंग मैनिपुलेटिव. मैनिपुलेटिव क्या होता है? मैनिपुलेटिव इज शोइंग फेवरेटिज्म. किसी को अच्छा दिखाना और किसी के साथ आप बायसनेस कर रहे हो. सो यू आर नॉट डूइंग दैट. It involves self-awareness, getting to know and be in charge of the real you. Whatever decision you have taken, you are accountable for it. See, the circle. Assertive क्या होता है? ये आपकी your needs in the yellow box and this is the other needs. अब इन दोनों के बीच में आपने एक balance बनाया. How you created this balance? You created through assertiveness. Then is communicating. Assertiveness. How would you indulge in this tool? So communicating with power. Assertiveness में आपके पास power. Power means you have to be straight in your thoughts. You have to be very forceful and at the same time you are not supposed to be biased. So power in communication refers to ability to influence. आप दूसरों को इस चीज़ के लिए तैयार भी कराओगे. Whatever thing you feel is correct, you would motivate others to ride into your boat. कैसे करते हैं हम? Stick to the point. Do not change your opinion. See, it is not only in this, in everyday life also. If you keep on changing your decision, if you keep on changing your thoughts, nobody would count on you. कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा. Once you think, once you have weighed the pros and cons, उसके बाद आपका जो भी thought process है, stick to that. Don't be too casual. Be very professional. किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो. एम्फसाइज की आइडियाज. वाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन, द क्रक्स ऑफ इट यू नीड टू डिस्कस ऑल्सो. टेलर फिट योर कम्युनिकेशन टू योर ऑडियंस. टेलर फिट योर कम्युनिकेशन इज अगेन चूजिंग द करेक्ट वर्ड. ऐसा नहीं हो
कि आपने कुछ रॉन्ग वर्ड्स चूज़ किए जिसकी वजह से वॉट एवर थिंग्स यू आर कम्युनिकेटिंग टू द लिसनर, they are not understanding in the same way. And then is to connect is, if still people have doubt, try to connect with them. Be ready 24 into 7 for the thoughts, for any query, for any problem people are facing. Now this is all explained whatever I have told you, so I'm not wasting time on this. You can just read these things elaborately. It is given in the slides. I've already explained this. See, next comes emotional quotient with interpersonal skills. Again, one of the very important topic. Emotional quotient क्या होता है? See, हमारे साथ बहुत बार होता है ना, we are in stress, we are not able to handle the problem. So in such cases, this interpersonal skill helps us to have positivity in and around us. So that positivity comes with interpersonal skills. So as the definition is already given, that emotional quotient skills, I would say EQ, allows you to leverage competencies to enhance performance and productivity in your organization. So this is all in management terms. हिंदी में अगर मैं बोलूँ, इससे क्या होता है कि आप को सिर्फ पॉजिटिव तरीके ढूंढने हैं जिसके जिसके थ्रू अगर आप स्ट्रेस में भी हो, या आपको कोई प्रॉब्लम है, या आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, या कोई कन्फ्लिक्ट है, उन सब को हटाते हुए आप एक रैशनल, है ना, रैशनल डिसीजन लो. द डिसीजन, द बिहेवियर शुड बी रैशनल. सो द फोकस इज, क्या फोकस, आप क्यों करोगे ऐसा? That improving leaders' social skills. This helps in designing your personality in such a way that you set an example for your juniors also. See, here also the definition is given. It refers to a set of emotional and social skills and competencies that influence the way we perceive and express ourselves. See, your followers would take it to be how you depict your personality. आप जो दिखाओगे, आपके जो followers है वो वही देखेंगे, and if they like it, they would definitely be following you. So you have to break that ice. You have to create a way in which you are able to handle the situation. The negative things also you have to turn into a positive one. अब आप इस EQ skills को develop कैसे कर सकते हो? How you can do that? You need to take initiative. In any task, आप कोई भी चीज़ करो, आपको पहल करनी पड़ती है. You have to take the initiative. You have to tell the responsibility. Demonstrate responsible enthusiasm for your job by striving to go the extra mile. Go the extra mile means whatever is expected from you. जो भी expectation है उससे थोड़ा ज़्यादा करो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको. योर फॉलोअर्स, दे आर अज्यूमिंग कि ऐसा होगा, आप उससे और अच्छा करो. सो टेक इनिशिएटिव. डू नॉट हेजिटेट इन टेकिंग द इनिशिएटिव. सो डू टास्क विदाउट बीइंग आस्क्ड. डू नॉट वेट कि वो मुझे बोलेगा तो मैं करूँगा. नहीं, डू इट whenever you feel that there is a need of the hour, and accordingly you can take the initiative. So next, how you develop, कैसे develop करते हो? If a co-worker has a large project and you have some time on your hands, आपके co-worker है, उसके पास जो है project जो है उसका बहुत बड़ा है, and you have some spare time, help him, volunteer yourself. See, maybe ठीक है, I would agree that in present scenario there are a lot of people who take credit, but believe me, once you do such things, whenever you are in need, that particular person would help you. So do not hesitate. Do good with others, and definitely good will come to you. So further, you could seek more challenging work and strive to develop your technical skills and do it. Be the owner. Now, how can you develop? Second is act as a team player. Act as a team player means
when you're part of it, just step into the competition. जो भी difficulties आप face कर रहे हो, with the help of leadership skills आप उस चीज़ को पार करो and try to be a good player. Practice leading in small group discussions. कुछ discussion हो रहा है, go and participate yourself. You can tell your ideas and you can have knowledge from the others also. So do not be a backseat driver. Next is be flexible. Now be flexible is, maybe it happen कि आपने जो सोचा है and once you are doing brainstorming session, the other person comes up with a good idea. Do not throw your decision onto them. If you feel कि उससे आपको profit होगा, try and take that thing and be flexible. Be flexible means अपने ideas को, अपने plan को as per the situation, as per the need चेंज करते रहो. एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं गलत, सी वी पीपल आर नॉट मशीन्स, इवन मशीन्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स. तो हमसे भी गलतियाँ होती हैं, बट बी फ्लेक्सिबल. अंडरस्टैंड करो कॉन्स्टेंट्स को एंड रीजंस वाई समवन इज अनएबल टू स्टिक टू अ प्लान. what do you mean by constant? They are unforeseen circumstances. Communicate effectively. Whatever is running into your mind, positive or negative, be very specific. So communicate clearly through, there are various modes of communication which we have done in the previous class. Written hai, oral hai, non-verbal hai. Try to choose the best one and then try to solve the problem. Strategic leadership. You know what is EQ, but how to apply it. See, what things are required: critical thinking skills, influencing even when you do not have the authority. Maybe the other person, your boss has given the more responsibility to the other person, your co-worker, but just because of that, do not be a backyard. Do not stand at the back. उसको help करो, influence करो, motivate करो. Why? Ultimately the goal is growth of the company. है ना. तो अब जो आप जिसमें काम कर रहे हो, इवन इफ यू नॉट पार्ट ऑफ इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के तो पार्ट हो, बट उस प्रोसेस के पार्ट नहीं हो, द प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं हो, बट स्टिल यू कैन गिव योर आइडियाज. सपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस, रिस्पॉन्डिंग टू द इंटेंस इमोशंस. नाउ सी व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस EQ, बहुत सारे वर्क प्लेस के चैलेंजेस होंगे. While reading, we feel that yes, there is such a rosy picture of the organization, but actually when you're working, you feel lot of hurdles, lot of challenges, lot of obstacles, and you believe me, it becomes very difficult even to survive at such places. Survival also is at stake. So लेकिन आपने उसको हैंडल करना है. कैसे हैंडल करना है? See, introspection when solving problems as a team includes acknowledging the thoughts of others, one of the key elements of emotional intelligence. इंट्रोस्पेक्शन करो. जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप देखो कि किसका आइडिया अच्छा है, क्या कैसे है, एंड ट्राई टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट. इन्फ्लुएंसिंग जब आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है, you, as I said, that you're not part of that project, but still, just to show your belongingness to the organization, you need to indulge yourself and be beneficial, be a good productive member of the company. But how to influence someone? कैसे आप influence करते हो? First of all, respect other person's opinion. See, maybe you are right, maybe he is right, but अगर वो गलत भी है, still you need to hold respect. थिंकिंग प्रोसेस को समझो. ट्राई टू रेक्टिफाई हिम. डू नॉट टेल हिम कि वो गलत है. सी, इट्स रिटन. उनको ये नहीं बोलो कि आप गलत हो. जस्ट मेक द चेंजेस एंड द पर्सन विल हिमसेल्फ अंडरस्टैंड. मेक इंक्लूसिव एंड लेस डिविसिव. व्हाट मीन्स डिवाइड मत करो, आप इंटीग्रिटी पे वर्क करो. बी कन्वर्सेशनल, नॉट आर्ग्यूमेंटिव. ज़्यादा कम्युनिकेट करो. लिसन मोर एंड टॉक लेस. Now, I like, see here also, whatever I've told you, it is written कि आप कैसे वर्क प्लेस चैलेंजेस को हैंडल करते हो.
True influence can be seen in great leaders. Influence is how you persuade others to believe in you. How do you implement EQ to address your workplace challenges? Supporting the effectiveness and success of your change initiative. Whatever thing you are striving for, आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ कि हाउ द कंपनी वुड बी बेनिफिशियल फ्रॉम इट, benefit from it, what effectiveness it would create in the growth of the management. Change management focus on people. Do not always strive for changing in people कि इसको हटाओ टीम से और दूसरे मेंबर नो. Change management focuses on people. Means change management means the management is designed, the people of management designed such a way कि उन जो existing है employee उन्हीं के thought process को वो mold करके एक ऐसा visualize करे जिससे कि आपकी कंपनी में growth हो. So when initiating a change, the first step is to dig down further to divide your specific objectives is whatever your steps are going for. I mean the destination is your objective. Typically, what are the work see applying EQ to address your workplace challenges. इसमें क्या क्या cover होता है? Sponsorship. Whatever things you are communicating, you should have support of your senior level management also, either directly or indirectly. Buy-in from those involved and effective. They should also be part and parcel of the communication process. They should be involved and you should also tell them the impact कि ये जो changes आप लाओगे how it would affect them. Communicate करो उनको that what are the pros and cons, and then readiness. Make them ready for the wonderful change which you are about to bring. Now, what things you need to have to communicate your EQ, to apply your EQ in your workplace challenge. You have to be very patient, you have to be very persistent, practical, positive and purpose. Persistence is continuing, है ना. अगर ऐसा नहीं है कि once whatever thoughts you have communicated, अगर वो किसी ने accept नहीं किया, you just step back. No, आप continue करते रहो, try करते रहो, and therefore this is what is called workplace challenge. यही तो workplace challenge है. If you quit in between, then you are a loser. If you want to be a winner, be persistent in your steps. The last one, going through transitions that accompany change can be thriving and also be difficult. See, definitely it is not such an easy task. जब आप कोई transition क्या होता है? Big change. Whenever you are about to bring a change, there would be, you would interact with millions of people, different category of people who would hold different attitude. Few would support, few would not give you not support you. So in such cases, it is you who has to mold the behavior of the other employees. So there are basic 5 P's of things to consider that can help you negotiate, navigate course to the intense emotion that accompany transition and change. So this is all about interpersonal skills. In the next session, I would come up with the MCQs, and those would be the questions which are frequently asked in your competitive exams. Thank you so much for watching the video. Have a good day.